morning, good afternoon, good evening, or at whatever time you are watching this video. Welcome, welcome, welcome. So let me introduce myself first. This is me, Akshar, and I am glad that you clicked on this video. In today's video, I'm going to talk about why I started and what motivated me to start this YT channel. I hope you all will be with me till the end. Let's start with that. First, before starting the video, let me tell you something. ताकि वीडियो में कोई भी इंटरप्शन ना आए और कोई भी पॉइंट इधर उधर ना हो जाए और वीडियो का फ्लो बेकार ना हो, इसलिए मैंने सारी चीज़ों को अपने पास नोट करके रखा है लाइक शो लाइक्स। फिर उसके बाद मैं जो है यहाँ पे आप सबके सामने अपनी फीलिंग्स रखने जा रही हूँ दैट and these are my actual feelings. Please ignore all the background noise. क्या करूँ मेरे पास इसके सिवा भी फिलहाल के लिए कुछ नहीं है. Let's start with the point number first. So the point first is the dream I kept delaying. Right? Okay. So I just want to ask all single question. Have you ever wanted to do something so badly but kept telling yourself, maybe not today, maybe I'll start when everything is perfect? It's a very lame joke actually, okay? क्योंकि परफेक्ट जैसी चीज़ कभी खुद से नहीं आती, हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें वो चीज़ लानी पड़ती है. That I genuinely feel is that you don't need everything perfect to start. You just need a proper plan that how to initiate things. That's all. मैंने ये चीज़ एक्चुअली फील करी है बिकॉज मैं भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट चीज़ें ढूंढने के पीछे लगी रहती थी कि जब परफेक्ट टाइम आएगा, जब मेरे पास सही चीज़ें होंगी, तब इसके बाद मैं अपना चैनल खोलूँगी, एकदम तबाही मचा लूँगी. पर ऐसा नहीं है. जब आप एक्चुअल में उतरते हो ना उस चीज़ में, तब आपको पता चलता है कि कितना डिफिकल्ट होता है इन चीज़ों को करना और साथ ही साथ में अपनी रेगुलर लाइफ को भी मेंटेन करना पड़ता है. शुड हैव टू बी मेंटेन्ड पैरेलली, राइट? वन डे आई रियलाइज समथिंग. इफ आई केप्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, आई माइट नेवर स्टार्ट एट ऑल. एंड दिस इज सो ट्रू. So I stopped asking myself, what if I fail, and started asking, what if this becomes the best decision I ever. Until I pushed myself to learn, and I'm still pushing myself to learn more and explore, and by this only I can be a better version of myself, right? थोड़ा ही बनूंगी, but at least बनूंगी तो. You know that I was just good at adding videos or random filters together, and then after at last I'll add some music, and that's how simple a video editing to me was. So for the longest time I kept waiting for better ideas, better editing, better cameras, and even more confidence. I kept telling myself that I wasn't ready. Let me tell you something. Do not think of any stupid outcomes without taking a single step towards your goal. The people you admire, do not think of these stupid outcomes without taking any single step towards their goal. And that's the reason they are at the place that you want to be. And that's why you admire them. क्योंकि आप उनके जैसा बनना चाहते हो, पर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या. क्योंकि फेल होना इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्रेस. मैंने भी यही चीज सोची कि अगर फेल हो जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा. That's how this channel began. Point number second, why I started this channel. So I started this channel not because I have everything figured out. It's just because I want to grow. मेरे लिए स्टार्ट करना जरूरी था. मैंने करा because that's all what is in my hand. Just want a place where I could learn, grow, make mistakes, laugh at them, improve, and become a better version of myself. Now I spend most of my time with GPT just to make myself better and my content better. Even
बिफोर स्टार्टिंग दिस चैनल मैं जीपीटी के साथ अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड कर चुकी हूँ, सारी चीज़ें एनालाइज करने से लेके कैसे इनिशिएट करना है वो तक भी मैंने जो है उससे पूछ पूछ के करा है। बिकॉज वाई नॉट, अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास चीज़ें हैं करने को, आपके पास फ़ोन है, आपके पास आजकल की टेक्नोलॉजी है, देन वाई नॉट टू यूज इट। व्हाट ChatGPT said that you should have to upload at least 1 to 2 videos daily. And the funny thing is that मैंने सोची है कि बहुत आसान है, मैं तो कर लूँगी, पर फिर आती हैं एक्चुअल दिक्कतें। आसान लगता है वीडियो शूट करके उसको एडिट करना, वो इतना आसान नहीं होता है, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं होता है, क्योंकि आई एम स्टिल लर्निंग। एंड मेरे साथ तो जो ग्लिचेस आती थी, पूरा पूरा वीडियो डिलीट हो जाता था, कभी कभी जिस फोल्डर में सेव करती थी वीडियो वो नहीं मिलता था, मेरे मोबाइल की स्टोरेज भर जाती थी। तो मेरे साथ तो बहुत दिक्कतें आती थी बनाने में वीडियो। और इनफैक्ट मैं भी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करी, मैं बहुत एक्सपीरियंस नहीं हूँ। ये जितने 4 वीडियोस मैंने डाले हैं ना, इसी में मेरी हालत ख़राब होने लगी थी कि इतनी ग्लिचेस आने लगी थी मेरे फ़ोन में, मतलब पूरा वीडियो शूट बेकार हो जाता था मेरा, कभी साउंड रह जाता था, कभी कोई फिल्टर रह जाता था, कभी कोई टेक्स्ट जो है उल्टी सीधी जगह पे लग जाता था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं व्हेन यू आर न्यू क्रिएटर। मुझे तो ऐसे सर पकड़ के बैठना पड़ जाता था कि हे भगवान, मैंने आखिर में वीडियो सेव किया तो किया कौन से फोल्डर में है, मुझे तो ये भी नहीं पता था। By this I realized that when you do that much effort towards your goal, you stop hating others for what and how they are doing things, because you know that if you are putting that much effort towards your goal, they are also putting that much, and in fact more than you, in their field to be better, and everyone is working hard towards their goal। तो आप दूसरों को हेट करना ही बंद कर देते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। जिस तरीके से आप अपनी फील्ड में मेहनत कर रहे हो, जाहिर सी बात है कि हर इंसान अपनी फील्ड में उतनी ही मेहनत करे। सो फिर हेटिंग नहीं होती है, देन यू स्टार्ट सीइंग देम, ऑब्जर्विंग देम विदाउट जजिंग देम, एंड दैट्स द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ लाइफ दैट एवरी पर्सन हैव टू डू अकॉर्डिंग टू मी। बाय दिस you just do your work silently without judging others, and that's what you have to learn। मैंने भी ये चीज सीखी है, मैंने इतनी मेहनत करी उस चीज पे, तो सामने वाला इंसान भी उस चीज पे कितनी मेहनत कर रहा है, मैं उसको क्यों हेट करूँ? Why I will judge or not, whatever। मैं क्यों उसको हेट करूँ, मैं क्यों उसको जज करूँ, मैं कौन होती हूँ ये चीज करना? So that's what I think this conversation is becoming more serious now. So, to me, this YouTube channel isn't just a channel. It's a little diary of my life, right? A place where I can be completely myself. And years from now, I want to look back at these videos and smile, because they'll remind me of where I started and how far I have came. So, the third point is, to everyone watching this video, I have a message for you all. I may not know your name, your story, or what you are going through right now, but I'm truly grateful that our paths crossed here. But you know, somewhere along the way, I realized this journey stopped being just about me. It turned out to be about us. Maybe you found my channel by accident, you were just scrolling, or maybe you were just choose to stay. Whatever what you hear, I am truly grateful and thank you so much for being here. Wait, the video is not over yet. There are some points remaining. So point number 4. Why every one of you matters. Every view, every comment, every like, every second you spend watching my video means more to me than you realize. Because I'm doing all this just for you. I'm doing this to share my thoughts with you, because at this stage at which I am right now, that's all I can give you from my side. So my time,
my efforts are the only thing that I have with me right now. And that too, I would love to spend it on you without any hesitation. So please spend some of your precious time with me also here on this channel, because at last that's all what matters to me the most. Knowing that out of everything you could be doing, you choose to spend a little part of your life with me is something I'll never take for granted. There goes point number 5, my biggest dream. So this place where I am talking to you right now is never just for me only. And trust me, it will never gonna be. Because this place belongs to you and me after you, right? So my biggest dream isn't just to make videos. It's to build a place where we can all grow together, celebrate the little wins, learn from the hard days, and remind each other that it's okay not to have everything figured out. I hope you can understand me. Even one of my videos make you smile after a difficult day, gives you a little comfort, or encourages you to take one small step towards your own dream, then I'll know that this journey is worth it. My existence is worth it. Me making videos for you all, worth it. Everything that I am doing for you is worth it. सॉरी अगर थोड़ी लाइट कम पड़ रही है क्योंकि मुझे यहाँ से वाला डोर क्लोज करना पड़ा, जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा लाइट मतलब नेचुरल लाइट दे रहा था, पर क्योंकि बाहर लियो मेरा डॉग है, इनफैक्ट माई लाइफ लाइन, वो जो है खेल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा बाग कर रहा है, इस वजह से थोड़ी आवाज़ आती है आप लोगों को तो डिस्टर्बेंस होगी, इसलिए मैंने वाला डोर क्लोज कर दिया है. सो सॉरी फॉर द लाइटिंग. Let's continue with our video. So what I just want to say is that to all my lovely viewers out there, आप लोगों के लिए मैं कोई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल सा नाम ढूंढने की सोच रही थी, because you are so special to me. Let's continue with our video. So I just want to say you are a big part of why I keep creating. क्योंकि अगर आप लोग नहीं देखोगे तो मेरा क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं बनता. I just hope that little by little we become more than just a creator and viewer. Obviously, आप सब ऊपर तो मैं कभी नहीं जा सकती. I hope we become a family that lifts each other up, celebrates each other's growth, and reminds one another that no dream is too small to chase. Never put that thought in your mind that anything is difficult. It is just new. And when you take a single step, when you cross that borderline that you have plastered in your mind, and it is too difficult, I can't do this. When you take a single step out of that borderline, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल में आपको बस इनिशिएट करने की जरूरत थी. आगे का रास्ता खुद ब खुद सामने दिखता चला जाता है. Believe me, if you actually want to do it, you can make it. So don't lose hope. So whether there are 10 of us, 1,000 or millions one day, I hope, I promise I'll always be grateful for every single one of you. You matters to me the most. सबसे 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है पूरे वीडियो की, you matters to me the most, and that's why I am making this video just for you, just only for you. So the 7th point is thank you. So thank you for believing in me while I'm still learning, still growing, and still figuring out things. Because when a person is strange and you don't know him, it becomes more difficult to trust him than a person you know from very long time. So you trusted me
with all your belief and everything. मैं कभी भी कोई ऐसी आई होप सो गलती तो नहीं करूंगी अपने सबकॉन्शियस माइंड से। मैं ऐसी गलती तो कभी नहीं करूंगी कि मैं कभी आपको हर्ट करूं। I'll see you in the next one. Till then, Radhe Radhe and bye bye. I'll never do something like that. So that's why you all are so special to me. Right now, I don't have anyone to listen to me, but maybe one day, who knows, maybe one day, and if you support me, I'll surely gonna make it. I'll surely gonna make it. So thank you for giving me a little space in your life. I hope this channel always feels like a safe little corner where you can smile, feel inspired, and know that you are never alone on your journey. You all have worked so hard today, and I believe in you. Just take a deep breath to appreciate yourself, and please do not forget to reward yourself. आप अपने कैपेसिटी से ज्यादा वर्क करते हो, सो रिवॉर्डिंग योरसेल्फ इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। मैं खुद रिवॉर्ड करती हूँ अपने आप को। अगर मैं कोई चीज़ अचीव कर लेती हूँ या कुछ ऐसा काम होता है जो मुझे करना होता है और वो कंप्लीट हो जाता है, तो इतनी इतनी भी चीज़ें मेरे लिए रिवॉर्ड बन जाती हैं। अपनी फेवरेट कार्टून्स देखना, अपनी फेवरेट एनिमेटेड स्टोरीज देखना, क्योंकि मैं इन्हीं में ज़्यादा रहती हूँ। एनिमेटेड चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं ये सब ज़्यादा देखती हूँ। और बस ऐसे ही करके अपने आप को रिवॉर्ड करती रहती हूँ। जैसे अभी वाला वीडियो अगर फाइनली शूट हो जाएगा परफेक्टली और एडिट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, इंडियन एक्सेंट बाहर आ जाता है, तो अगर ये अपलोड हो जाता है तो आई विल रिवॉर्ड माई सेल्फ with my favorite story, animated story. मैं बहुत एनिमेटेड स्टोरीज देखती हूँ, तो मैं 2 एनिमेटेड स्टोरी देखूंगी एक ही जगह पे, just to reward myself. Okay, so the last point is here, which is the 8th point. Until next time, I love you all. Thank you for being here. Thank you for believing in me. Thank you for becoming a part of this little dream of mine. I'll see you in the next one. Until then, keep believing in yourself and work hard. Just don't exhaust yourself too much. Reward yourself. Taking a moment for yourself isn't selfish, it's important. Right? Hope you all like today's video और आप तक मेरा मैसेज पहुंच पाया कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया। And remember, we are growing together. I'll see you in the next one. Till then, Radhe Radhe and bye bye.